हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई। दिस मी डॉक्टर सिद्धार्थ अरोरा एंड फ्रेंड्स। अभी मैंने 10 पार्ट्स की बैटल लेवल एमसीक्यू सीरीज फॉर यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स खत्म किए। तो तुम लोग अचानक से सांस में सांस आई होगी कि तुमने 100 क्वेश्चंस कर लिए। अब अच्छे किए बुरे किए वो कौन पूछने वाला तुमको, है ना। सो दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन इन माय क्लास, राइट। सो जो 10 पार्ट्स हमने किया है वो हर क्वेश्चन में मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया। हर क्वेश्चन में मैंने तुम्हें 2-2 मिनट दिए एंड देन आई एक्सप्लेन यू कि किस तरह से वो करना है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो तुम्हें लगा कि वो ख़त्म हो गया, चलो जी छुट्टी हो गई, गेम ओवर। ऐसा चलने वाला है नहीं। अब मैं जितने हमने 100 क्वेश्चंस किए उनकी रैपिड फायर रिविजन करूँगा। सो अब तुम्हें दूध का दूध पानी का पानी होगा कि तुम लोगों ने सही मायनों में अटेंड किया, कि तुम लोग तो भी डे ड्रीम की दुनिया में थी। अब इससे ज़्यादा और क्या तुम्हें मैं प्रिपेयर करूँ फॉर योर यूपीएससी अपकमिंग एग्जाम, and that is why this is a rapid fire revision. अब ये सेम क्वेश्चंस, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन सेम सीक्वेंस में रिपीट होंगे, लेकिन यू विल गेट ओनली 60 सेकेंड्स टू आंसर दीज क्वेश्चंस। देयर विल बी नो एक्सप्लेनेशन। अब अगर तुम्हारे मार्क्स कम आ रहे हैं तो यू रियली नीड टू इंट्रोस्पेक्ट एंड लुक विद इन योर सेल्फ कि कहाँ पर गलती हो रही है, बिकॉज वास्ट मेजोरिटी ऑफ दीज क्वेश्चंस वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एंड ये मेरी ड्यूटी है तुमको बताना कि अगर यहाँ पर ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम्हारे एब्सोल्युटली 10 आउट ऑफ 10 टाइप नहीं हो रहे तो देयर इज समथिंग दैट यू रिक्वायर टू बी डूइंग बेटर। सो वेलकम टू दिस रैपिड फायर रिविजन। रैपिड फायर रिविजन का मतलब है 60 सेकेंड्स है, आंसर्स देने हैं तुमने आइदर इन योर नोटबुक और इन द कमेंट्स। यू कैन नॉट अफोर्ड टू गो रॉन्ग नाउ, बिकॉज इसको हमने बहुत डिटेल में 2-2 मिनट के साथ एक्सप्लेन किया है। Now you will get only 60 seconds. I am Dr. Sidharth Arora। Unacademy की दुनिया में मुझे सेट लाइव कोड से जाना जाता है, जो कि मेरा रेफरल कोड है। अगर आप Unacademy के ऐप पर जाओगे तो वहाँ पर तुम्हें मेरे प्रोफाइल के साथ रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेज दिखाई देंगे। द फर्स्ट टाइप ऑफ कोर्स इज कॉल्ड एज कॉम्प्रीहेंसिव पॉलिटी कोर्स, और ये कॉम्प्रीहेंसिव पॉलिटी में ए टू जी पॉलिटी पढ़ाया जाएगा, राइट फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई टिल द टाइम ऑफ सिविल सर्विसेज एंड डेमोक्रेसी, एवरीथिंग आई हैव एक्सप्लेन्ड। एक और टाइप का कोर्स इज कॉल्ड एज कॉम्प्रिहेंसिव गवर्नेंस। फिर से चाणक्य के गवर्नेंस मॉडल से लेकर अभी तक तो रिसेंट ई गवर्नेंस मॉडल तक मैंने सब कुछ डिटेल में किया हुआ है। थर्ड एंड वेरी पॉपुलर कोर्स इज अ कंप्लीट इंटरनेशनल रिलेशन कोर्स, अगेन पूरा इंटरनेशनल डिप्लोमेसी से रिलेटेड एंड ऑल द वे टिल द इंडिया चाइना एंड इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस, एवरीथिंग आई हैव सॉर्टेड आउट इन दिस वन कोर्स। Another course is which is for optional course is comprehensive PSI और optional course। जिन लोगों ने PSI और optional चूज़ किया है उनकी लॉटरी लग गई है, because as जो मुझे कमेंट्स और फीडबैक मिला है उसके अनुसार दैट इवन जो पॉल साइंस के ग्रेजुएट्स हैं उन्होंने सालों साल पढ़ के भी कॉलेज में वो सब कुछ नहीं समझा या उतनी डेप्थ में नहीं किया जितना हम लोगों ने इस कोर्स में किया है। एंड फाइनली ऑल दीज थिंग्स विल बी मर्ज विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड आंसर राइटिंग सेशन। सिर्फ एक कोड याद रखना तुम्हें, SIDLIVE। तुम्हारे सारे सवालों का जवाब इस एक कोड से आ जाएगा, SIDLIVE। चाहे तुम अनअकैडमी के प्लस कोर्सेज लो चाहे आइकॉनिक कोर्सेज लो। देखो अगर तुम इन प्राइस लिस्ट को देखोगे ना तब भी तुम्हें पता चल जाएगा दैट द चार्जेस और द मनी दैट इज चार्ज बाय अनअकैडमी इज़ वेरी वेरी लो एज कम्पेयर टू द ऑफलाइन एंड फिजिकल क्लासेस। वो लो तो है ही है, लेकिन अगर सेट लाइव कोड यूज़ करोगे तो इट इज़ इवन लोअर बिकॉज यू विल गेट एन इमीडिएट 10% डिस्काउंट ऑल्सो। UPSC CSE ऑप्शनल कॉम्बो अवेलेबल है। तो अगर तुमने सिर्फ GS का कोर्स लिया हुआ है तो ठीक है, लेकिन अगर आप GS और ऑप्शनल कंबाइन करते हो तो आई थिंक इट इज़ अ इवन मोर इंटेलिजेंट डिसीजन, बिकॉज 2 साल का या 3 साल का कोर्स लोगे तो एक तो तुम्हारी सारी हेडेक एक ही प्लेटफॉर्म से हो जाएगी, और दूसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट that you will get a huge discount। एक बार यहाँ पर ध्यान से देखो 29% off। Can you believe this part? So Unacademy has also brought for you what is called as a last mile program। तो लास्ट डे तक Unacademy तुम्हारा साथ देगा even till the interview। So पॉलिटी गवर्नेंस इंटरनेशनल रिलेशन 24 कैरेट प्रिपरेशन अगर तुमने देखनी है तो एक बार नीचे उस स्क्रॉलर में देख लो। दिस इज वेयर यू हैव टू डिसाइड। जॉइन माई कोर्सेज by using the code SIDLIVE and get immediate 10% discount। तो तुमने देखना होगा कि क्या होता है रॉक सॉलिड प्रिपरेशन विच विल गिव यू अ रियलिस्टिक चांस ऑफ पासिंग दिस एग्जाम। सो ट्राई दिस पार्ट। और अगर तुम 28 अप्रैल से पहले ये वीडियो देख रहे हो तो एक और बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट हो सकता है। 28 अप्रैल से पहले अगर तुमने अनअकैडमी ज्वाइन किया यूजिंग द कोड SIDLIVE तो तुम्हें 10,000 रुपये की बुक्स
फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी. सो इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हो जाएंगे और अपडेटेड करंट अफेयर्स भी हो जाएगा. एवरीथिंग विल बी होम डिलीवर्ड. और 28 अप्रैल से पहले लेने वाला, 28 अप्रैल से पहले. एक साल का कोर्स एक साल का ना हो के तब तक एक्सटेंड हो जाएगा जब तक प्रीलिम्स 2022 नहीं होता. और 2 साल का कोर्स 2 साल का कोर्स ना हो के तब तक एक्सटेंड हो जाएगा जब तक 2023 का प्रीलिम्स नहीं होता. सो चाहे वो टेस्ट सीरीज हो, चाहे बैच कोर्सेस हो, take the opportunity, use the code SEDLIVE and join our courses. So you're a wise gang of students. I'm sure you will take a wise decision, but take it now. Don't waste your time and let us start this part. अब आ गया है तुम्हारी बारी. अब इसमें मेरा रोल ख़त्म हो गया है. मैं क्वेश्चन पूछूंगा, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होगी, तो मैं घड़ी के हिसाब से एग्जैक्टली 60 सेकेंड्स मिलेंगे, ना 1 सेकेंड ज़्यादा ना 1 सेकेंड कम. एंड देयर विल बी नो अनफेयर एडवांटेज गिवन टू एनीवन. अगर तुम आंसर दे रहे हो तो तुम अपने आप को +1 दो, रॉन्ग कर रहे हो तो -1 दो. और ये तुम्हें खुद को वेरी वेरी डिलीजेंटली एंड ऑनेस्टली यू विल हैव टू लुक एट इट. और अगर तुमने ये ठीक से कर लिया तो यू नो दैट यू स्टैंड अ रियलिस्टिक चांस ऑफ पासिंग दिस एग्जाम. लेट अस स्टार्ट दिस पार्ट. अब मेरी तरफ से कोई मदद नहीं होगी, मैं सिर्फ क्वेश्चन पूछूंगा और तुम्हें आंसर बताऊंगा और टाइम बताऊंगा. फर्स्ट क्वेश्चन, राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड एज एन इंट्रिंसिक पार्ट of right to life and personal liberty. Which of the following in the Constitution of India correctly and appropriately imply the above statement? Your time starts now. T-1 minute. कुछ गड़बड़ नहीं है, एकदम 60 seconds का काउंटडाउन स्टार्ट है. Article 14 and provisions under the 42nd Amendment to the Constitution. Article 17 and directive principles of state policy in Part 4. Article 21 and freedoms guaranteed in Part 3. Article 24 and the provisions under the 44th Amendment. 40 seconds बाकी. T-30 seconds. 30 seconds. T-20 seconds. मैं कोई मदद नहीं करूंगा. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. All right, and the answer of course is Article 21 and the freedoms guaranteed in Part 3 of the Constitution. फिर से explain करने के लिए, अगर मैं तो यहाँ पे बैठा नहीं हूँ, make sure that you watch the first part of the battle level UPSC. उसमें मैंने explain भी किया हुआ है. Without wasting any more time, question number 2 coming your way. Regarding money bill, which of the following statement is not correct? Your time starts now. T-1 minute. A bill shall be deemed to be money bill if it contains only provisions related to imposition, abolition, remission, alteration, or regulation of any tax. A money bill has provision for the custody of the Consolidated Fund of India or the Contingency Fund of India. A money bill is concerned with the appropriation of monies out of Contingency Fund of India. A money bill deals with regulation of borrowing of money or giving of any guarantee by the government of India. Not correct पूछा है. T-30 seconds. 30 seconds. देखा, अब तुम्हें पता चला कि टाइम बहुत जल्दी निकलता है. ऐसा लगता है कि 1 मिनट लंबा होता है. T-20 seconds. 10, 9, 8, 7, Hurry up. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Not correct answer is certainly clear with this part. It is concerned with appropriation of monies out of Contingency Fund of India. Certainly not. That is under the control of the President. ये भी explanation जाकर देख लो in the second video of this first part of battle level. With reference to the election of the President of India, consider the following statements. The value of the vote of each MLA varies from state to state. The value of the vote of MPs of the Lok Sabha is more than the value of the vote of MPs of the Rajya Sabha. Which of the statements given above is or are correct? 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2. By the way, इस टाइम इस वाले पार्ट सीरीज में हम लोग सिर्फ 50 क्वेश्चंस को रैपिड फायर करेंगे और फिर द सेकंड वीडियो विल बी द नेक्स्ट 50 seconds. T-40 seconds.
minus 30 seconds. T minus 20 seconds. 20 seconds. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Straightforward answer, no waiting of this time. Which of this is are correct? Yes, MLAs का vote will be different because of proportional representation. MPs का formula is the same. Explanation करना है, देखना है तो battle level series का first part देखो. Question number 3 coming here now. Question number 4. The Speaker of the Legislative Assembly shall vacate his or her office if he or she ceases to be a member of the Assembly. 2. Whenever the Legislative Assembly is dissolved, the Speaker shall vacate his or her office immediately. Which of the above statement is or are correct? T minus 50 seconds. T minus 40 seconds. T minus 30 seconds. Hurry up, 30 seconds left. T minus 20 seconds. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. बहुत ही स्मार्ट आंसर था और इसकी एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेना. ओके, सो वन ओनली इज द वन विच इज करेक्ट बिकॉज जैसे वो वेकेट करेंगे वैसे ही इज नो लॉन्गर द स्पीकर, बट द स्पीकर प्रो टाइप का कॉन्सेप्ट इज द नेक्स्ट वन. एक्सप्लेनेशन के लिए बैटल लेवल सीरीज फिर से देख लो. क्वेश्चन नंबर 5. विच वन ऑफ द फॉलोइंग reflects most appropriate relationship between law and liberty? T minus 1 If there are minute. more laws, there is less liberty. If there are no laws, there is no liberty. If there is liberty, laws have to be made by the people. If laws are changed too often, liberty is in danger. Hurry up. T minus 40 seconds. T minus 30 seconds. Hurry up, hurry up, hurry up. ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है हमने. T minus 20 seconds. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. All right. So I'm sure सबको याद है. There are no laws, there is no liberty, and this is how you should be knowing your explanation. As I said, watch the video again. Question number 6 coming your way. Consider the following statements. So सब लोग आंसर देखते चले जाओ. The answer is B. Question number 6 coming your way now. Consider the following statements. अपने आप को मार्क्स देते जाओ. +1 for a correct answer, -1 for a wrong answer. ये rapid fire है. 1. No criminal proceedings shall be instituted against the governor of a state in any court during his term of office. 2. The emoluments and allowances of the governor of a state shall not be diminished during his term of office. Which of the statements given above is or are correct? Your time starts now. T minus 1 minute. मैं एक्सपेक्ट करूंगा तुम्हारे 100 में से 100 ठीक आए. रॉन्ग आ रहा है तो यू मस्ट टेक दिस विद योरसेल्फ वेरी वेरी सीरियसली. T minus 50 seconds. T minus 40 seconds. 40 seconds. T minus 30 seconds. 30 seconds now. T minus 20 seconds. Ten, 9, 8,
5 seconds. 4, 3, 2, 1. Alright, answers to the sixth question. I hope सबको याद है. Both 1 and 2 are correct statements. आर्टिकल 361 से रिलेटेड, और दूसरा वाला मैंने बोला था ये करीब करीब हर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस के लिए एब्सोल्युटली वैलिड स्टेटमेंट है. एक्सप्लेनेशन, गो बैक टू द वीडियो एंड वॉच दैट पार्ट. रॉन्ग हो रहा है, इसका मतलब है तुमने उस वीडियोस को ठीक से वॉच नहीं किया. मेक श्योर दैट यू वॉच दैट. Which of the following are regarded as main features of the rule of law? Limitation of powers, equality before law, people's responsibility to the government, liberty and civil rights. Select the correct answer using the code given below. T minus 1 minute. Time starts. 1 minute. T minus 50 seconds. T minus 40 seconds. Forty seconds. T minus 30 seconds. Half a minute now. 30 seconds. T minus 20 seconds. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ऑल राइट, ये बहुत ही सुंदर क्वेश्चन था. मैंने इसको काफ़ी देर से एक्सप्लेन किया था. एक्सेप्ट द पीपल्स रिस्पॉन्सिबल टू द गवर्नमेंट, रेस्ट ऑफ दिस कैन बी अंडरस्टूड एज रूल ऑफ लॉ, जो कि कोटेशंस में दिया हुआ, कोट्स में दिया हुआ. सो मेक श्योर, वेरी इंपॉर्टेंट. एक्सप्लेनेशन के लिए वॉच द वीडियो एंड गो टू क्वेश्चन नंबर 8. If the President of India exercises power as provided under Article 356 of the Constitution in respect of a particular state, then the Assembly of the state is automatically dissolved. The powers of the legislature of such state shall be exercisable by or under the authority of the Parliament. Article 19 is suspended in that state. The President can make laws relating to that state. Rapid fire, 60 seconds. T minus 50 seconds. 50 seconds. T minus 40 seconds. T minus 30 seconds. 30 seconds left now. Rapid fire, my friends. T minus 20 seconds. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, answer of course is very very simple. The powers of the legislature of the state shall be exercisable by or under the authority of the parliament. ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और हमने इसको डिस्कस किया हुआ कि प्रेसिडेंट्स रूल क्यों बोला जाता है इसको. This is one of the reasons why it is called as the president's rule. You should know completely about this part. Explanation, please watch the video. You will be understanding this even better. Question number 9. कोई waiting point नहीं है because of the fact that this is rapid fire. With reference to the Parliament of India, which of the following parliamentary committees scrutinizes and reports to the House whether the powers to make regulations, rules, sub-rules, bylaws conferred by the Constitution or delegated by the Parliament are being properly exercised by the executive within the scope of such delegation. The time starts now. Committee on Government Assurances, Committee on Subordinate Legislation, Rules Committee, Business Advisory Committee. T minus 50 seconds. T minus 40 seconds. T minus 30 seconds. T minus 20 seconds. 20 seconds, my friends.
वैसे तो इसके लिए 20 सेकंड देने ही नहीं चाहिए थे मैंने, बट फिर भी 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ऑल राइट, आई थिंक इसका तो इतनी बड़ी एक्सप्लेनेशन थी, मुझे तो इसमें 10 सेकेंड्स में काफ़ी हो जाता. कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन इज आंसर, और इसको मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है इन द बैटल लेवल सीरीज, और उस वीडियो को पार्ट 1 देख लो, विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस. नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. क्वेश्चन नंबर 10 कमिंग योर वे. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. बताओ, टाइम ही नहीं दे मिल रहा. T minus 1 As minute. per Right to Education Act, to be eligible for appointment as a teacher in the state, the person would be required to possess minimum qualification laid down by the concerned State Council of Teacher Education as per RTE Act. For teaching primary classes, a candidate is required to pass a teacher eligibility test conducted in accordance with National Council of Teacher Education guidelines. In India, more than 90% of teacher education institutions are directly under the state government. बताओ, इतनी जल्दी खत्म हो जाता है 1 मिनट, T minus 30 seconds. और ऑलरेडी at 30 seconds. T minus 20 seconds. Only 20 seconds left. Ten, 9, 8, Go for it. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. All right, and the answers are very very simple. मैंने explain किया हुआ है. Only the second one is correct. अब यहाँ से तुम्हें पता चलता है, अपने आप को मार्क्स करो. +1 -1 0. अगर 10 out of 10 आ रहे, you're really on the way of cracking this exam. और अगर नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब है तुम्हारा basic foundation is very very weak. Don't let go of this opportunity. I will remind you again that अगर तुम 24 कैरेट preparation चाहते हो, so use my code SETLIVE and join this course. You're a wise gang of students. Take a wise decision now. बाद में पछताने से कुछ नहीं होने वाला. Make sure that you do this. Rapid fire revision is going to continue, and let's go now. Question number 11. Are we ready? Consider the following statements. 1. The Lok Sabha has 12 members nominated by the President. 2. The Lok Sabha cannot be dissolved by the President without the advice of the Prime Minister. 3. In the Lok Sabha, if a party does not have minimum of 75 members, its leader cannot be recognized as leader of opposition. Which of the statements given above is or are correct? 1 and 3 only, 2 only, 1, 2 and 3 only, 1, 2 T and 3. minus 1 minute. T minus 50 seconds. 50 seconds now. T minus 40 seconds. तो टाइम कितना रिलेंटलेस होता है माय फ्रेंड. एवरी सेकंड काउंट्स. T minus 30 seconds. पता भी नहीं चलता कहाँ 1 मिनट गायब. T minus 20 seconds. Only 20 seconds left. सुनाई दे रहा है ना मैडम, काउंट कर रही हैं. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. All right, and the answer, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था एक्चुअली. इसको हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया हुआ है. ओके, बट नाउ लुक एट वीडियो नंबर 2 और पार्ट 2 ऑफ द बैटल लेवल सीरीज. उसमें एक्सप्लेनेशन है. आंसर ऑफ कोर्स इज बी, दैट द लोक सभा कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड बाय द प्रेसिडेंट विदाउट द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. लुक एट द एक्सप्लेनेशन ओवर देयर. एक्सप्लेनेशन का ये टाइम नहीं है, ये रैपिड फायर रिविजन है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. 1. The Parliament of India can place a particular law in the 9th schedule of the Constitution of India. 2. The validity of a law placed in the 9th schedule cannot be examined by any court and no judgment can be made on it. Which of the statements given above is or are correct? 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2. T minus 1 minute. बताओ यार, एक सेकंड की सांस नहीं लेना. थक तो नहीं जाओगे 50 से 50 क्वेश्चन के बाद बेहोश होकर गिर जाओगे. T minus 50 seconds. T minus 40 seconds. T minus 30 seconds. 30 seconds. T minus 20 seconds.
9, Only 10 seconds. 7, 6, 5, 4, 3, 2, मेरी तरफ से कोई मदद की उम्मीद नहीं है. And the answer of course is one only. Okay, ये जो second वाला था वो आयर कोयलो and वामन राव के से explanation देखनी है. Go to the video part 2 of the battle level series and you'll understand this. फटाफट अपने आप को marks दो. +1 for correct answer, -1 for a wrong answer, and 0 for not attempt. And question number 13. Rule of Law Index is released by which of the following? Amnesty International, International Court of Justice, Office of the UN Commission for Human Rights, World Justice T Report. minus 1 minute. T minus 50 seconds. T minus 40 seconds. T minus 30 seconds. 30 seconds left. T minus 20 seconds. Only 20 seconds. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, यार 1 minute कितना relentlessly खत्म हो जाता है. 2, 1. And मैंने इसका आंसर बताया था. ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था. ज़्यादा लोगों को आइडिया ही नहीं था. This was World Justice Project. It has got nothing to do with Amnesty International, International Court of Justice, or for that matter, the UN Commissioner for Human Rights. So, explanation, look at the video. Question number 14 here. Rapid fire chal raha hai. Consider the following statements. The Election Commission of India is a 5-member body. 2. The Union Ministry of Home Affairs decides the election schedule for the conduct of both general elections and by-elections. Number 3. Election Commission resolves the disputes relating to splits, mergers of recognized political parties. Which of the statements given above is or are correct? 1 and 2 only, 2 only, 2 and 3 only, 3 only. T minus 1 minute. T minus 50 seconds. एक्सप्लेनेशन हमने बहुत अच्छे से किया हुआ है. अब गलत नहीं कर सकते तुम. T minus 40 seconds. T minus 30 seconds. T minus 20 seconds. 20 seconds. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Alright, मैं फिर बोल रहा हूँ इलेक्शंस के सारे प्रोसेस ढंग से कर लो. Yes, it has got quasi judicial powers. पहले वाला सिंपल है. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज नॉट अ 5-member body, it is a 3-member body. And Union Ministry of Home Affairs क्या करेगा? You require an autonomous body, and that is Article 324. Explanation: look at the video. Which one of the following is not a feature of Indian federalism? और बाकी लोग जो लोग अपने आप को मार्क्स दे जा रहे, +1 for a correct answer, -1 for a wrong answer, and 0 if not attempted. There is an independent judiciary in India. Powers have been clearly divided between centre and the states. Federating units have been given unequal representation in the Rajya Sabha. It is a result of an agreement amongst the federating units. T minus 40 seconds. T minus 30 seconds. T minus 20 seconds. 20 seconds. सांस भी लेने का टाइम नहीं होता. अब तुम्हें मालूम पड़ा कि तुम्हें कितना रॉक सॉलिड प्रिपरेशन करनी पड़ेगी. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. All right, and simple answer is a result of an agreement among the federal. It's not of Indian federalism. India is a quasi-federal state.
with a unitary tilt. So बहुत ही interesting part. और अगर ये तुम्हें नहीं आता तो you are in trouble. Make sure that you understand everything about federalism. Question number 16 coming your way. टाइम ही नहीं मिल रहा सर, टाइम लेने का टाइम ही नहीं है. रैपिड फायर. Democracy superior virtue lies in the fact that it calls into activity A. The intelligence and character of ordinary men and women. 2. The methods for strengthening executive leadership. 3. Or C. A superior individual dynamism and vision. D. A band of dedicated party workers. Time starts. T minus 50 seconds. T minus 40 seconds. 40 seconds. T minus 30 seconds. T minus 20 seconds. 20 seconds left. मेरे ख्याल से तो वर्ड में छुपा हुआ आंसर है. 5, 4, 3, 2, 1. All right, and the answer of course is the intelligence and the wisdom character of ordinary men and women. और इसको वैसे तो एक्सप्लेन मैंने बहुत अच्छे से किया हुआ है, लेकिन अगर नहीं भी किया होगा तो आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम द वर्ड डेमोक्रेसी. Without wasting a single more moment, let's go to question number 17. Local self-government can be best explained as an exercise in A. Federalism. B. Democratic decentralization. C. Administrative delegation. D. Direct democracy. T minus 50 seconds. T minus 40 seconds. Only 40 seconds left. अब हम सिर्फ 50 क्वेश्चंस करेंगे इस वाले वीडियो में, और फिर एक और रैपिड रिवीजन लेकर आएंगे अनदर 50 क्वेश्चंस करने का. मुझे उम्मीद है कि सारे 50 क्वेश्चंस तुम्हारे करेक्ट आने चाहिए, और बाद में भी. दैट इज 100 आउट ऑफ 100. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. टाइम अप. आई थिंक सबको याद है बलवंत राय मेहता कमेटी की रिपोर्ट, एंड द वर्ड दैट वाज यूज्ड फॉर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वाज डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन. ये वर्ड को कहीं मेमोराइज कर लो, या तो आंसर्स में एज एन MCQs में फॉर्म में आता है, या फिर अगर सीधा सीधा क्वेश्चन भी आएगा रिटन में तो यू शुड यूज द वर्ड डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन फॉर द पंचायती राज सिस्टम एंड द म्यूनिसिपैलिटीज. क्वेश्चन नंबर 18. विदाउट अ सेकेंड ब्रेक, consider the following statement. The constitutional government is one which A. 1. Places effective restrictions on individual liberty in the interest of state authority. 2. Places effective restrictions on the authority of the state in the interest of individual liberty. Which of the statements given above is or are correct? Your time starts now. 1 only, 2 only, both 1 and 2. Neither 1 nor 2. T minus 50 seconds. T minus 40 seconds. T minus 30 seconds. Thirty seconds. T minus 20 seconds. Ten, 9, 8, 7, Time out. 6, 5, 4, 3. अब तुम्हें पता चला कितना एक्यूरेसी, कितनी रॉक सॉलिड प्रिपरेशन की जरूरत है. पता भी नहीं चलता, शायद इतनी देर में तो चॉइसेस भी ना पड़ा. तो यू हैव टू डू इट एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट एंड आंसर दिस पार्ट. Of course, the second one is correct. Places effective restriction on the authority of the state in the interest of individual liberty. Only the second choice is correct. First choice is absurdly wrong. Question number 19.
Which one of the following objectives is not embodied in the preamble to the Constitution of India? Liberty of thought, economic liberty, liberty of expression, liberty of belief. T-1 minute. Time starts. इसका एक ही तरीका है इस आंसर को देने का कि तुम्हें पूरा preamble मुंह ज़बानी याद हो, word by word. We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic, political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity T-40 seconds. and fraternity, assuring the dignity of the individual and unity and integrity of the nation in our Constituent Assembly on this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. मुझे तुमसे कितना प्यार है तुम्हें इसी से पता चल गया. मैंने तुम्हें पूरा प्रियम्बल बोल दिया, आंसर उसी में छुपा हुआ था. बट ये रैपिड रिवीजन है. आई एम श्योर अभी भी अगर तुमने ये आंसर दिया तो क्या पता होगा. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, टाइम अप. 3, 2, 1. मैंने तुम्हें पहले बता दिया था लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप यानी कि इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं है. आंसर ये गलत था. एंड लेट्स गो टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेकेंड राउंड. ये एक्चुअली सेकेंड राउंड है. जिन जिनको इसकी एक्सप्लेनेशन देखनी है, इसी का पार्ट 2 बैटल लेवल MCQ सीरीज जिसका पार्ट 2 है, उसमें हमने क्वेश्चन 11 to 20 किया, उसमें एक्सप्लेनेशन भी है. तो लुक एट दैट पार्ट. The mind of the makers of the Constitution of India is reflected in which of the following? A. The preamble. B. The fundamental rights. C. Directive principles of state policy. D. Fundamental duties. T-1 minute. सिर्फ 1 minute. Rapid fire. T-50 seconds. T-40 seconds. T-30 seconds. T-20 seconds. 20 seconds left. Ten, 9, कितनी जल्दी खत्म हो जाता है पता भी नहीं चलता. बताओ. 5, 4, 3, 2, 1. All right, I think ये बिल्कुल ही नो ब्रेनर था. I think everyone who is a concerned Indian citizen and उससे भी ज़्यादा important अगर सिविल सर्विस एस्पिरेंट है, you should know that is the preamble. अब तुम्हें समझ में आएगा कि एक्चुअली रॉक सॉलिड प्रिपरेशन क्या होती है. अपने अपने मार्क्स टोटल करते जाओ. +1 फॉर करेक्ट आंसर, -1 फॉर रॉन्ग आंसर. अगर अभी भी नहीं आ रहा है, प्लीज़ डोंट हेजिटेट. अभी समय मत बर्बाद कीजिए. Join my courses by using the special code SIDLIVE and get immediate 10% डिस्काउंट. समय निकल जाता है बेटा. देखा कितनी जल्दी 1 minute क्रॉस करता है. उतनी ही जल्दी 1 साल भी खत्म कर जाता है, पता भी नहीं चलेगा. 1-2 साल. मेक योर सेल्फ बेटर प्रिपेयर्ड स्टूडेंट. गिव योर सेल्फ अ रियलिस्टिक चांस ऑफ पासिंग दिस एग्जाम. एक बार देखो what is 24 karat rock solid preparation. We are doing rapid fire revision of our battle level MCQ series. Next question coming your way. एक और रिमाइंडर, 28 अप्रैल से पहले अगर तुमने अनअकैडमी के कोर्सेज ले लिए तो यू विल गेट 10,000 रुपीज़ वर्थ ऑफ बुक्स. 10,000 रुपये की बुक्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, जिसमें जो बुक्स एक्चुअली अनअकैडमी के बेस्ट टू द बेस्ट UPSC एजुकेटर्स ने खुद बनाई है. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी उसमें अपडेटेड विद करंट अफेयर्स भी है. एंड उसी साथ 28 अप्रैल से पहले अगर तुमने कोर्स लिया तो 1 ईयर का कोर्स, 1 ईयर का अनअकैडमी कोर्स 1 साल का नहीं रहकर एक्सटेंड कर दिया जाएगा टिल दैट टाइम जब प्रीलिम्स ऑफ 2022 होगा, और 2 ईयर का कोर्स तब तक एक्सटेंड कर दिया जाएगा जब तक प्रीलिम्स ऑफ 2023 होगा. क्वेश्चन नंबर 21 कमिंग योर वे, यानी कि ये बैटल लेवल सीरीज का 3rd पार्ट था. Right to vote and to be elected in India is a fundamental right, natural right, constitutional right, legal right. T-1 minute. T-50 seconds. 50 seconds. T-40 seconds. T-30 seconds. 30 seconds now.
minus 20 seconds. एक्सप्लेनेशन देखनी है तो इसी का थर्ड बैटल लेवल सीरीज का थर्ड पार्ट का वीडियो खुद चेक कर लेना. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ऑलराइट, आंसर ऑफ कोर्स इसके दो इसलिए क्योंकि जब ये यूपीएससी में जिस साल पूछा गया था तब तक इसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट माना गया था और डीएन पटेल, जस्टिस डीएन पटेल और दिल्ली हाई कोर्ट चीफ जस्टिस, द ऑनरेबल चीफ जस्टिस, उन्होंने जो डिसाइड किया है लेटेस्ट दिल्ली हाई कोर्ट जजमेंट के हिसाब से इट इज़ ए लीगल राइट. कितना एक्सप्लेनेशन है इसको जाकर उस वीडियो में देख लो, तुमको एक्सप्लेनेशन खुद समझ में आ जाएगी. क्वेश्चन नंबर 22 कमिंग योर वे. +1 फॉर अ करेक्ट आंसर, -1 फॉर अ रॉन्ग आंसर and 0 if unattempted. Which of the following are envisaged by right against exploitation in the Constitution of India? 1. Prohibition of traffic in human beings and forced labor. 2. Abolition of untouchability. 3. Protection of the rights of minorities. 4. Prohibition of employment of children in factories and mines. Select the correct answer using the code given below and your time starts now. T minus 50 seconds. T minus 40 seconds. 40 seconds. T minus 30 seconds. T minus 20 seconds. 20 seconds only. 10, 9, 8, बताओ कितनी जल्दी 1 मिनट खत्म. 6, 5, 4, 3, 2, 1. आई थिंक इसकी एक्सप्लेनेशन हमने बहुत क्लियरली किया हुआ है. इट इज़ ओनली 1 and 4, आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24. सेकेंड चॉइस इज आर्टिकल 17 एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज आर्टिकल 29 एंड 30. एक्सप्लेनेशन देखनी है वो वीडियो देख लो ऑफ द थर्ड पार्ट ऑफ बैटल लेवल यूपीएससी. मार्क्स तो अपने आप को अगर ठीक है तो +1, -1 और रॉन्ग आंसर फॉर -1 और 0 for not attempt. One of the complications of equality, one of the implications of equality in the society is the absence of A. Privileges, B. Restraint, C. Competition, D. T Ideology. minus 1 minute. T minus 50 seconds. 50 seconds. T minus 40 seconds. T minus 30 seconds. 30 seconds. Half the time gone. Let's do. T minus 20 seconds. 10, 9, 8. ये क्वेश्चन एक्चुअली एनसीईआरटी से भी आंसर दिया जा सकता है अगर पढ़ो तो इतना डिटेल में तो. 2, 1. ऑलराइट, आंसर ऑफ कोर्स इज एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस. अगर मेरे ख्याल से 6th या 7th की एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट में से भी यहाँ पर से आंसर आया हुआ है, तो इसलिए मैं सब लोगों को बोलता हूँ एनसीईआरटी जरूर पढ़ लिया करो. वन ऑफ द इम्प्लीकेशंस ऑफ इक्वालिटी इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिविलेज, एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस. याद रखना, दिस इज वन ऑफ द इम्प्लीकेशंस. देयर आर मेनी अदर. क्वेश्चन नंबर 24, एक्सप्लेनेशन देखनी है, वीडियो देख लो. Which principle among the following was added to the directive principle of the state policy by the 42nd Amendment to the Constitution? Equal pay for equal work for both men and women, participation of workers in the management of industries, right to work, education and public assistance, securing living wage and human conditions of work to the T workers. minus 1 minute. बताओ यार, टाइम उसी टाइम स्टार्ट हो जाती है. T minus 50 seconds. T minus 40 seconds. 40 seconds left. T minus 30 seconds. T minus 20 seconds.
10, 9, 8, 7, 6, 40 सेकेंड अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एक तुम्हारा होमवर्क हो जाना चाहिए तो मेमोराइज क्या क्या हुआ था और क्या क्या छूटा था और क्या क्या बचा था और बाद में कौन कौन सी चीज़ों को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था. पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज आर्टिकल 43 कैपिटल ए इज द करेक्ट आंसर टू दिस वन. और बाकी सब आई होप तुम्हें पहले से मालूम था दैट इट वाज प्रेजेंट इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ एंड यू शुड नो द आर्टिकल्स ऑल्सो. क्वेश्चन नंबर 25 इस रैपिड फायर का हाफ वे राउंड मार्क हो गया बिकॉज हम 50 क्वेश्चन करेंगे और बाकी 50 क्वेश्चन सेकेंड राउंड में करेंगे. रैपिड फायर चल रहा है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? राइट्स आर क्लेम्स ऑफ द स्टेट अगेंस्ट द सिटीजंस. Rights are privileges which are incorporated in the constitution of a state. Rights are claims of the citizens against the state. Rights are privileges of a few citizens against the many. Time start. T minus 1 minute. T minus 50 seconds. बहुत बढ़िया. बिल्कुल चक्कर खा के गिर जाओगे. इतना टाइम प्रेशर. T Now you minus have to get 40 used to this seconds. time pressure. T minus 30 seconds. Only 30 seconds left. ये होती है रॉक सॉलिड एग्जाम सेंट्रिक प्रिपरेशन. शांति से बैठने मत दो और प्रेशर बनाओ. ऐसे क्रिएट किए जाते हैं चैंपियंस. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. परफेक्ट. आई होप अगर लैंग्वेज भी ठीक से पकड़ लेते तो तुम्हें आ जाता आंसर. राइट्स आर क्लेम्स ऑफ द सिटीजंस अगेंस्ट द स्टेट. और ये फंडामेंटल राइट्स, लीगल राइट्स, स्टैट्यूटरी राइट्स, ये सब कुछ जरूर पढ़ लेना. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नो इट. Next question. Question number 26 coming your way. Consider the following statements. With reference to the Constitution of India, the directive principles of state policy constitute limitations upon legislative function, executive function, which are the statements given above is or are correct. One only, two only, both one and two, neither one nor two. Your time starts now. T minus 1 minute. T minus 50 seconds. T minus 40 seconds. 40 seconds. T minus 30 seconds. T minus 20 seconds. Ten, 9, 8, 7. इस क्वेश्चन पे बहुत सारी डिस्कशंस हुई है लेकिन जो इम्पोर्टेंट आंसर है जो हमको फॉलो करना है इज दैट द आंसर इज डी दैट इट इज़ नॉट अ लिमिटेशन, इट इज़ अ पॉजिटिव इंजंक्शन. सो इस पे एक्सप्लेनेशन देख लो इन द वीडियो सीरीज. Otherwise, the answer is D. +1 for a correct answer, -1 for a wrong answer. Question number 27 coming your way. Which one of the following statement is or are true of fundamental duties of an Indian citizen? A legislative process has been provided to enforce these duties. They are correlative to legal duties. Select the correct answer using the code given below. One only, two only, both one and two, neither one nor two. अगर तुम में से कोई नया इस वीडियो को देख रहा होगा तो बोला होगा सर ये इतना जल्दी क्यों जा रहा है? जल्दी इसलिए जा रहा है क्योंकि बहुत तसल्ली बख्श, बहुत स्लो एज वेल एज विद एक्सप्लेनेशन ये हो चुका है ऑलरेडी. दिस इज अ रैपिड फायर रिविजन ऑफ द बैटल लेवल सीरीज ऑफ पार्ट 1 to part 10. T minus 40 seconds. क्या ब्रेन पे तुम्हारे प्रेशर पड़ रहा होगा? विदाउट इवन अ ब्रीदर द T minus क्लॉक 30 इज टिकिंग. seconds. T minus 20 seconds. Ten, 9, 8. Fundamental 7, duties of Indian citizens. 6, 5, 4.
ये एग्जैक्टली अगर तुम्हें पता है तो मिनर्वा मिल्स केस की जजमेंट में से निकला हुआ आंसर है, एंड ऑफ कोर्स ये एनसीईआरटी में भी यू कैन ऑलवेज इंटरप्रेट। बोथ ऑफ देम आर रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है एक बार जाकर देख लो, पार्ट 3 ऑफ द बैटल लेवल सीरीज। फॉर दोज ऑफ यू अपना वो मार्क्स देना है, +1 फॉर अ करेक्ट आंसर, -1 फॉर अ रॉन्ग आंसर, एंड 0 इफ नॉट अटेम्प्टेड। In the context of India, which one of the following is the correct relationship between rights and duties? A. Rights are correlative with duties. Rights are personal, hence independent of society and duties. Rights, not duties, are important for advancement of the personality of the citizen. Duties, not rights, are important for the stability of the state. -1 minute. यार टाइम ही नहीं मिल रहा है यार। T-50 seconds. अब तुम्हें पता चला होगा कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम। इफ यू डोंट प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम डिलीजेंटली, यू आर इन ट्रबल। इतना ही टाइम मिलता है। T-30 seconds. T-20 seconds. 20 seconds left. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। राइट्स आर कोरिलेटिव विद ड्यूटीज, ये इतने बार हेल्ड है इन वेरियस जजमेंट्स एज वेल एज इन द एनसीईआरटी, और आई थिंक यू शुड हैव नेवर गॉन रॉन्ग। आगे देखने की जरूरत भी नहीं थी, बट फिर भी अगर आपको एक्सप्लेनेशन देखनी है तो यू कैन ऑलवेज लुक एट द वीडियोस। 1. In the election for the Lok Sabha or State Assembly, the winning candidate must get at least 50% of the votes polled to be declared as elected. According to the provisions laid down in the Constitution of India in Lok Sabha, the Speaker's post goes to the majority party and the Deputy Speakers to the opposition. Which of the statements given above is or are correct? 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2. सांस भी नहीं लेने देने। T-50 seconds. T-40 seconds. 40 seconds. T-30 seconds. T-20 seconds. 20 seconds. देखो कितनी जल्दी सोचना पड़ता है, इसलिए मैं बोलता हूँ जो नीचे लिखा हुआ है ना, डॉक्टर सिद्धार्थ अरोरा सर, लाइक यूज दैट एंड मेक योरसेल्फ, गिव योरसेल्फ अ रियलिस्टिक चांस। इतनी देर में तुम सोच भी नहीं पाओगे एंड टाइम विल बी ओवर। क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ कोर्स इज वेरी वेरी सिंपल, बोथ ऑफ देम आर रॉन्ग। ओके, ना हमारे यहाँ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, हमारे पास फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, और ये जो सेकेंड वाला पॉइंट है ये एक कन्वेंशन है, ऐसा कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ नहीं है। ब्रिंग्स अस टू क्वेश्चन नंबर 30, विच वन ऑफ द फॉलोइंग is are not necessarily the consequences of proclamation of the president's rule in a state? 1. Dissolution of the state legislative assembly. 2. Removal of the council of ministers in the state. Dissolution of the local bodies. Select the correct answer using the code given below. 1 and 2 only, 1 and 3 only, 2 and 3 only, 1, 2 and 3. T-1 minute. T-50 seconds. फोकस, देखो कितना फास्ट तुम्हारे ब्रेन को एनालाइज करना पड़ता है, इसीलिए यू आर एक्सपेक्टेड टू डू व्हाट इज रॉक सॉलिड प्रिपरेशन। ऐसे बैठे रहोगे कुछ नहीं होगा। एंड जो लोग मुझसे प्लस में पढ़े हुए हैं, यू शुड ऑल्सो गेट हैबिचुएटेड टू अंडरस्टैंड दिस। T-20 seconds. 20 seconds. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, Time up. 2, 1. नॉट नेसेसरली द कॉन्सिक्वेंसेज है, ये ऐसा बोमे केस के जजमेंट से पता चल जाएगा दैट यू नीड नॉट नेसेसरली डिसॉल्व द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट देयर हैज गॉट नथिंग टू डू विद लोकल बॉडीज। एक्सप्लेनेशन करनी है
make sure that you look at the explanation given in the video series और इसका part 3 देख लेना. अब तुम्हें पता चल जाएगा what is the requirement is 24 karat preparation, quality governance and international relations. Use my code SIDLIVE SIDLIVE and take a 10% discount and give yourself some huge chances of passing this exam. We are continuing with our rapid fire revision of Battle UPSC और 50 क्वेश्चंस का करना था, 30 क्वेश्चंस हो चुके हैं. वी आर नॉट वेस्टिंग एनी मोर टाइम. प्लीज़ रिमेंबर 28 अप्रैल से पहले अगर तुमने अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन ले ली तो 1 year प्लान विच इज़ वैलिड फॉर 1 year will not be valid for 1 year only. It will be extended till prelims 2022 and 2 year plan will be valid not only for 2 years but till the time of prelims 2023. Question number 31 coming your way. Question number 31. Out of the following statement, choose the one that brings out the principle underlying the cabinet form of government. An arrangement of minimizing the criticism against the government whose responsibilities are complex and hard to carry out to the satisfaction of all. A mechanism for speeding up activities of the government whose responsibilities are increasing day by day. A mechanism of parliamentary democracy for ensuring collective responsibility of the government to the people. A device for strengthening the hands of the head of the government whose hold of the office of the people is in a state of decline. Minus 50 seconds. 50 seconds. T minus 40 seconds. No breather, no breather. Explanation देखनी है तो पार्ट 4 ऑफ द बैटल लेवल सीरीज देख लेना. उसमें एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा, उसमें एलिमिनेशन का मेथड भी मिल जाएगा. Minus 20 seconds. 20 seconds. इतना ही टाइम मिलता है माय फ्रेंड, इतना ही ब्रीदर है. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. टाइम अप. आई थिंक यहाँ पे समझ में आ जाएगा. वो वर्ड जो काम का वर्ड है वो है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी एज गिवन इन आर्टिकल 75. Article 75 says the Union Council of Ministers to be headed by the Prime Minister has collective responsibility towards the Lok Sabha. Lok Sabha are directly elected representatives of the people, so automatically you are answerable to the people. हो गया आंसर. एक्सप्लेनेशन और डिटेल में करनी है तो look at the video and look at question number 32 coming your way. For election to the Lok Sabha, nomination paper can be filed by. अगर ये क्वेश्चन नहीं आता तो बैठ के गरम गरम कॉफ़ी पीना, बिकॉज इतना सिंपल क्वेश्चन आएगा नहीं. A. Anyone residing in India. B. A resident of the constituency from which election is to be contested. C. Any citizen of India whose name appears in the electoral roll of a constituency. D. Any citizen of India. तुम्हारी तो बैठे बैठे सांस फूल गई होगी because I'm not giving you one breather also. T minus 50 seconds. Please remember, those who are joining us somewhere in the middle, उनको लग रहा होगा सब कुछ फास्ट क्यों हो रहा है. फास्ट इसलिए हो रहा है बिकॉज ये तो नंबर 1 नॉर्मल स्पीड है. सेकेंड, इसको हमने काफ़ी डिटेल में ऑलरेडी कर लिया है in the battle level series. This is merely the rapid fire revision of that. Seconds. T minus 20 seconds. 20 seconds. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. I think everyone should be knowing. Answer of course is C. अपने आप को मार्क्स दो +1 -1 0. एक्सप्लेनेशन देखनी है. वैसे इसकी क्या एक्सप्लेनेशन देखनी चाहिए, बट फिर भी अगर देखने का दिल कर रहा है तो लुक एट द पार्ट 4 ऑफ द बैटल लेवल सीरीज where we have explained this in detail. With reference to the Parliament of India, consider the following statements. This is question number 33. A private member's bill is a bill presented by the member of Parliament who is not elected but only nominated by the President of India. 2. Recently, a private member's bill has been passed in the Parliament of India for the first time in its history. Which of the following statement is or not correct? 1, only 2, only both 1 and 2, neither 1 nor 2. और ये रिसेंटली को रिसेंटली रहने देना. ऑल्दो ये पहले रिसेंटली का मतलब कुछ और मतलब था, लेकिन कंसिडर दिस एस 2021 में ये रिसेंटली है, तो भी आंसर ठीक होगा. T minus 40 seconds. T minus 30 seconds. 30 seconds. T minus 20 seconds.
20 seconds. Ten, nine, eight, seven, six, five, बहुत ही four, सिंपल क्वेश्चन, three, क्योंकि ये इसको आंसर देने के लिए सिर्फ इतना मालूम होना चाहिए था कि प्राइवेट मेंबर कौन होता है. एंड आई होप एवरीवन नोज दिस. और ये जो रिसेंटली था, दिस वाज द ट्रांसजेंडर्स इक्वालिटी बिल, जो उस टाइम पे भी पास होने की कोशिश की थी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने, वो आज तक पास तो हुआ नहीं है. सो यू माइट एज वेल कंसिडर दिस एज द सेम चॉइस. Either ways, इसकी explanation देखनी है तो look at the video series. Question number 34 coming your way. The main advantage of the parliamentary form of government is that A. The executive and legislature work independently. B. It provides continuity of policy and is more efficient. C. The executive remains responsible to the legislature and head of the government cannot be changed without election. अब तुम्हें पता चला होगा रॉक सॉलिड प्रिपरेशन की ज़रूरत कितनी है, पॉलिटिक्स पढ़ते कैसे है. ओके, आराम से बैठे बैठे तसल्ली में पूरा दिन में 4 घंटे में 2 MCQs करने से कुछ नहीं होने वाला. T minus 40 seconds. 40 seconds. T minus 30 seconds. T minus 20 seconds. Ten, nine, eight, Time seven, up. 6, यहाँ पे 5, क्वेश्चन था मेन एडवांटेज, 3, और जैसे मेन एडवांटेज आता है तो इम्पोर्टेंट वर्ड आ जाता है द एग्जीक्यूटिव रिमेन्स रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर. ये क्वेश्चन हर साल आया है, कभी कभी लैंग्वेज चेंज करके आया, लेकिन द सेम एसेंस हैज बीन आस्क्ड अगेन एंड अगेन. एंड दैट इज व्हाई मैंने अपनी प्लस क्लासेस में एक्चुअली स्टार्ट ही इस कॉन्सेप्ट से करता हूँ. द एंटायर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी is based upon this principle of executive being answerable to the legislature. Question number 35. The Parliament of India exercises control over the functions of the Council of Ministers through 1. Adjournment motion. 2. Question number 3. Supplementary questions. Select the correct answer using the code given below. 1 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, 1, 2 and 3. Your time starts now. T minus 50 seconds. T minus 40 seconds. 40 seconds left. T minus 30 seconds. T minus 20 seconds. Ten, nine, ये जो क्वेश्चंस आते हैं मोशंस के, क्वेश्चन आवर्स के, 5, ये तुम्हें इन एंड आउट डिटेल में आना चाहिए बिकॉज दे विल वेरी ऑफन आस्क दिस क्वेश्चन. आंसर ऑफ कोर्स इज वेरी वेरी सिंपल. दीज आर ऑल द मेथड्स बाय व्हिच द पार्लियामेंट विल एक्सरसाइज कंट्रोल. इसकी एक्सप्लेनेशन देखनी है तो यू कैन ऑलवेज गो लुक एंड विद वीडियो. द एक्सप्लेनेशन इज नॉट द टाइम. रेस्ट ऑफ यू जिन लोगों ने आंसर दिया है, आंसर इज डी. +1 फॉर अ करेक्ट आंसर, -1 फॉर अ रॉन्ग आंसर एंड 0. In India, judicial review implies the power of the judiciary to pronounce about the constitutionality of laws and executive orders. B. The power of the judiciary to question the wisdom of the laws enacted by the legislatures. C. The power of the judiciary to review all the legislative enactments before they are assented to by the T president. minus 1 minute. The power of the judiciary to review its own judgments given earlier in similar or different cases. Be very, very, very T attentive minus and 50 fast. seconds. Things must come to you very fast. एक्यूरेसी होना चाहिए, और एक्यूरेसी तब आएगी जब ये सारे के सारे पॉइंट्स एब्सोल्युटली ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार की तरह तुम्हें याद हो. T minus 30 seconds. 30 seconds left. T minus 20 seconds. Ten, nine, eight, seven, six, 5, 4, 3, 2, 1. Judicial review is going to be your bread and butter. You must know the Supreme Court is the headliner.
तो तुम्हें सब मालूम होना चाहिए. What is judicial review? The power of the judiciary to pronounce about constitutionality of laws and executive orders. क्या इंडिया में कॉन्सेप्ट है जुडिशियल रिव्यू में, क्या यूएस में है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ एंड सब्सटैंटिव ड्यू प्रोसेस, ये तुम्हें मालूम होना चाहिए. व्हाट शुड बी द व्हाट वाज मार्बरी वर्सेस मेडिसिन केस ऑफ 1806, व्हाट इज जस्टिस मार्शल से, ये सब कुछ तुम्हें मालूम होना चाहिए. Then and only you'll be able to understand and answer this question. Next question is question number 37. Consider the following statements. 1. The minimum age prescribed for any person to be a member of Panchayat is 25 years. 2. A Panchayat reconstituted after premature dissolution continues only for a remainder period. Which of the statements are correct? 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2. 1 minute. This is a rapid fire. T minus 50 seconds. T minus 40 seconds. T minus 30 seconds. 30 seconds. T minus 20 seconds. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Simple question, slightly dicey. जब बात कर दिया जाए पंचायत की, रिमेंबर पंचायत इज नॉट अ लेजिस्लेटिव बॉडी, इट इज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी. इन 25 years की जगह 21 years is an acceptable provision. For those of you who do not understand this or are in trouble, please go and watch the videos. Rest of you, please give yourself +1 for a correct answer, -1 for a wrong answer, and 0 if not attempted. Question number 38. Which of the following statements are correct? A bill pending in Lok Sabha lapses on its prorogation. 2. A bill pending in the Rajya Sabha which has been passed by the Lok Sabha shall not lapse on the dissolution of the Lok Sabha. 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither T 1 nor minus 2. 1 minute. T minus 50 seconds. 50 seconds. T minus 40 seconds. T minus 30 seconds. T minus 20 seconds. Ten, 9, 8, 7, 6, Lapsing, 5, prorogation, 4, summoning, 3, involvement of Lok Sabha, Rajya 1. Sabha must be very, very clear with you. And please remember, this is the difference between British parliamentary system and ours. Bill pending in the Lok Sabha lapsing on prorogation, no, not here. Not here, otherwise ऐसा होगा तो हमारे तो वो बिल ही नहीं पास करेंगे. For those who want a detailed explanation, please go and watch the video. Rest of you, please give yourself +1 for a correct answer, -1 for a wrong answer. Let's go to question number 39. 1. The Chief Secretary in a state is appointed by the governor of that state. 2. The Chief Secretary in a state has a fixed tenure. Which of the statement is or T are correct? minus 1 minute. 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2. T minus 50 seconds. T minus 40 seconds. Forty seconds. T minus 30 seconds. T minus 20 seconds. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. When I have taught Chief Secretary, I explained it to the entire situation over here that whoever the Chief Minister is more comfortable will be appointing the Chief Secretary according to his own comfort. Although there is seniority and everything else also considered, but the most important thing, the comfort factor of the Chief Minister.
Hence, nothing has to do with the governor and certainly will not have a fixed tenure also. For those of you जिन लोगों ने मेरी क्लास अटेंड की है वो तो ऐसे ही इसको आंखें बंद करके आंसर दे देंगे. Rest of you, please mark yourself +1, -1 and 0. Brings us to question number 40, which was the last question of the part 4. And the Parliament of India acquires the power to legislate on any item in the state list in the national interest. So a resolution that effect is passed by the Lok Sabha by a simple majority of its total membership. Lok Sabha majority of not less than 2/3 of its total membership. Rajya Sabha by a simple majority of its total membership. Rajya Sabha majority of not less than 2/3 of its present members waiting. बताओ यार इतना जल्दी? यस, इसीलिए मैंने तुमको पहले इसको एक्सप्लेन कर दिया है. अब देखना है कि तुम लोग इसको कितना समझ पाए हो और कितने आंसर दे पाए हो. राइट, तो अब तुम्हें पता चलेगा कि ये सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है फ्रेंड. टाइम पास में बैठे रहोगे, कुछ नहीं होने वाला. T minus 20 seconds. 20 seconds. It should come to you like a drop of a hat. Article 249 says that Rajya Sabha, if they pass by a resolution by 2/3 present men voting, then for an activity period of 1 year, then the parliament does acquire the power to legislate on any item in the state list. ये तुम्हें आना चाहिए. इतना सोचने का टाइम ही नहीं होता जितनी देर में तुम बाकी सबको एनालाइज करोगे. It should come to you like a flash. अब तुम्हें मालूम पड़ेगा what is polity, governance and international relations का 24 कैरेट preparation. We create champions, my friends. अभी भी टाइम वेस्ट नहीं हुआ है. Make sure that you use my code SIDLIVE SIDLIVE, get immediate 10% discount and join our courses, bringing us to the last part of today's rapid fire revision, that is from question number 41 to question number 50, which was a part of the battle level series, and we will be covering up question number 41. The provisions of the 5th schedule and the 6th schedule in the Constitution of India are made in order to A. Protect the interests of scheduled tribes, B. Determine the boundaries between states, C. Determine the powers, authority and responsibilities of the panchayats. D. Protect the interests of all the border states. T minus 50 seconds. 50 seconds. T minus 40 seconds. T minus 30 seconds. T minus 20 seconds. Ten, 9, 8, 7, 6. शेड्यूल से कैसे पार्ट्स हैं जिसको तुम रट लो तो ज़्यादा अच्छा है, because they will ask you these questions. I hope everyone remembers 5th schedule and 6th schedule both are dealing with scheduled tribes. अगर थोड़ा सा क्वेश्चन और टफ हो सकता था, जैसे 5th schedule है scheduled tribes for other states, 6th schedule is for Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram. So protect the interests of scheduled tribes, etc. 5th schedule for other states, 6th schedule for Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram. Give yourself +1 for a correct answer, -1 for a wrong answer and 0 if you have not attempted. Question number 42. The fundamental object of Panchayati Raj system is to ensure which amongst the following: 1. People's participation in the development. 2. Political accountability. 3. Democratic decentralization. 4. Financial mobilization. The time starts now. T minus 50 seconds. 50 seconds to go. Focus. पहले atrocious चीज़ें हटा दो, फिर basic पे concentrate करो. Look at what are your concepts which are fixed. Where only it is required, start doing debating and eliminate the rest of the choices. It's a simple formula: A, B, C, D, E, and that is the only way of cracking T MCQs. minus 30 seconds. T minus 20 seconds. 20 seconds to go. अब तुम्हें पता चलेगा कि इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए कितना एफर्ट लगता है. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Alright, तो पहले atrocious choices हटाना बड़ा ज़रूरी था. Things like
यू नो वो पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी, अब पता हो इसमें पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी की क्या बात थी. सो दिस इज द एंटायर कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एंटायर सिनेरियो, that people's participation in development and financial mobilization. So these are two things जिसको आप देखने वाला है. So democratic decentralization, Balwant Rai Mehta committee, and this is the entire context of question number 42. Please go and look at for explanation. अगर आपको detail explanation देखनी है तो part 5 of the battle level series तुम्हें पूरा concept मिल जाएगा. Idea of, and I quote, welfare state. याद रखना quotes में दिया हुआ, in the Indian constitution is enshrined in its preamble, directive principles of state policy, fundamental rights, 7th schedule. ओके यहाँ पे थोड़ा सा टाइम वो मेरे को लगता है देयर इज सम प्रॉब्लम विद टाइमर. कोई बात नहीं, ऐसे सोचो कि तुम्हारा 1 मिनट चालू हो गया है. लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू. सो एग्जैक्ट 60 सेकंड में तुमको रिमाइंड दूंगा. हर टाइम थोड़ा म्यूजिक मिलने वाला है तुमको. ओके, सो द आइडिया ऑफ, आई कोट, वेलफेयर स्टेट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एनश्राइन्ड इन द प्रीएम्बल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल राइट्स एंड 7th शेड्यूल. याद रखना कोर्ट्स में पूछा गया है. Alright, please remember it is put in quotes. The ideal of welfare state. Ideal, okay. Ideal as in the final aim. And I think अगर ज़्यादा मैं होता 20 seconds left. Focus on that. Alright, so answer of course is Directive Principles of State Policy. Article 38 says that the state shall strive to become a welfare state in which justice, social, economic, political shall inform every sphere of national life. This is given in Directive Principles of State Policy. इसके ऊपर quotes दिए गए थे, hence given in Article 38 of the Constitution, and that is why it is called as the keystone of Part 4 of the Constitution of India. Let's go to question number 44 coming your way. Consider the following statement regarding Directive Principles of State Policy. 1. The principles spell out the socio-economic democracy in the country. 2. The provisions contained in these principles are not enforceable by any court. Which of the statements is correct? 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2. T-1 minute. दोबारा आ गई मैडम T-1 minute बोलती भाई. T-50 seconds. T-40 seconds. T-30 seconds. Thirty seconds left. DPSP is fundamental rights, fundamental duties. इन तीनों चारों को कॉन्सेप्ट को अलग से करो, बिकॉज उसमें से एक क्वेश्चन तो आता ही आता है. 10, 9, 8, 7, 6. So if you remember the concept of DPSPs, these were not for civil and political rights but for socio-economic rights. And Article 37 states very, very clearly about this part that the principles contained in Part 4 of the Constitution are not enforceable by any court of law. However, it shall be the duty of the state to enforce these principles while making laws. In other words, they are not enforceable, they are not justiciable. So इस हिसाब से दोनों ही होंगे. Explanation देखनी है. Go to the part 5 of the battle level series. You will be able to answer this part and see this part. Question number 45. Consider the following statements. 1. The Legislative Council of a state in India can be larger in size than half of the Legislative Assembly of that particular state. 2. The Governor of a state nominates the Chairman of the Legislative Council of that particular state. Which of the statements given above is or are correct? 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2. T-1 minute. T-50 seconds. T-40 seconds. 40 seconds ago. अब तुम्हें पता चल रहा होगा कि किस तरह से you have to focus. It should come to you very very fast. इतना टाइम मिलता ही नहीं और इसलिए बिल्कुल concrete, absolutely 24 कैरेट प्रिपरेशन करनी पड़ती है. ऐसा आराम से बैठे बैठे कुछ याद हो उसके अंदर फोकस सोचना पड़ेगा क्या.
4, 3, 2, 1. Great. तो स्टेट से रिलेशन, आई होप यू नो, लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन नॉट बी मोर देन 1/3 एंड गवर्नर ऑफ द स्टेट का लेजिस्लेटिव काउंसिल से कोई मतलब नहीं है. वो हेड एग्जीक्यूटिव है. दिस इज अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर. Nothing to do. Both of them atrociously wrong choices. You could have very easily eliminated. Please give yourself +1 for a correct answer, -1 for a wrong answer. Let's go to question number 46. There is a parliamentary system of government in India because the A. Lok Sabha is elected directly by the people. B. Parliament can amend the constitution. C. Rajya Sabha cannot be dissolved. D. Council of Ministers is responsible to the Lok Sabha. Your time T starts minus now. 1 minute. T minus 50 seconds. T minus 40 seconds. T minus 30 seconds. T minus 20 seconds. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4. The parliamentary system of government कब है, क्यों है, कैसा है, ये हर साल का क्वेश्चन है. Okay, if you remember the previous years also, they will ask you the same thing. Council of Ministers collectively responsible to the Lok Sabha. This comes from Article 75. And why Lok Sabha? Because last year, I think UPSC CSE 2020 made the government is responsible to the people. So government is Council of Ministers. Council of Ministers is responsible to the Lok Sabha. Lok Sabha is directly elected by the people. So automatically, directly, indirectly, Council of Ministers is responsible to the people. How simple, how funny, but how wow, how what a beautiful concept of democracy. Give yourself +1 for a correct answer, -1 for a wrong answer, and go to question number 47. No breather at all. 1. The Rajya Sabha has no power either to reject or to amend a money bill. 2. The Rajya Sabha cannot vote on the demand of grants. 3. The Rajya Sabha cannot discuss annual financial statement. Which of the statements given above is or are correct? 1 only, 2 T only. minus 1 minute. 2 and 3 only, 1, 2 and 3. T minus 50 seconds. T minus 40 seconds. T minus 30 seconds. T minus 20 seconds. 20 seconds to go. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. एब्सोल्युटली सिंपल क्वेश्चन. और यहाँ पे एक तुम्हें पता चल जाना चाहिए कि बजट का प्रोविजन कहाँ पे पढ़ना, क्या नहीं पढ़ना, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. The answer is 1 and 2 only. Please remember, Rajya Sabha can discuss annual financial statement. Rajya Sabha may introduction of money bill hota hai, and Rajya Sabha does contribute members to the department related standing committees. Jahan nahi hota, that is only the Lok Sabha is one which is responsible for voting on demand of grants. This is called power of the purse. +1, -1, 0. And question number 48 coming your way. When a bill is referred to the joint sitting of both houses of parliament, it has to be passed by. Your time starts now. T minus 50 seconds. T minus 40 seconds. Forty seconds to go. T minus 30 seconds. T minus 20 seconds. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Lovely. See, when a bill is mentioned to or referred to the joint sitting of the House, it has to be an ordinary bill. Article 108 utilizes ordinary bill को सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है. बाकी सब टाइम पास है. इतना तुम्हें बेसिक मालूम होना चाहिए जॉइंट सेशन के लिए कौन कौन से टाइप के बिल रेफर किए जा सकते हैं. आई थिंक becomes a very very simple answer. +1 -1 0 goes to question number 49. Those of you who are seeking any explanation, please go and watch the videos. Your time starts now. T-1 minute. The executive power of the union is vested with the Prime Minister. The Prime Minister is the ex-officio chairman of the Civil Service Board. Civil Services Board का ex-officio chairman कौन है ये अगर तुम्हें नहीं मालूम होगा तो T-50 seconds. बहुत दुख होगा. T-40 seconds. T-30 seconds. T-20 seconds. Now you notice कि कितना solid preparation होना चाहिए. तुम्हारे ब्रेन को सांस भी नहीं मिलता, ऑक्सीजन ग्लूकोज सक करने का भी टाइम नहीं मिलता. 6, 5, 4, 3, 2. Things must strike you very fast. Executive power of the Union of India is vested not in the Prime Minister but in the President. And the Prime Minister is not the ex-officio chairman, it is the Cabinet Secretary. So neither 1 nor 2, +1 -1 and 0. Bringing us to the last question of the rapid revision series, the rapid fire series. And let us see if you are able to answer this question. With reference to the Union government, consider the following statements. The Department of Revenue is responsible for the preparation of Union budget that is presented to the Parliament. No amount can be withdrawn from the Consolidated Fund of India without authorization from the Parliament of India. All the disbursements made from the public account also need the authorization from the Parliament of India. Which of the statements given above is or are correct? 1 or no, 2 only, 2 and 3 only, 2 only, 1 to 3. 40 seconds. 40 seconds to go. T-30 seconds. T-20 seconds. Ten, 9. Last 10 seconds. 7, This will be the end of the 6, first part of the rapid fire 5, series. We'll break the 4, 51st, the 100th wala 2. at the later 1. stage. Everyone, please mark yourself. +1 -1 0. Answer is C. Those looking for explanation, please look at the battle level series part 5 and you will be able to do this part. मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे सारे आंसर्स करेक्ट होंगे, बट अगर नहीं भी होंगे तो स्टार्ट वर्किंग वेरी वेरी हार्ड ऑन दिस पार्ट. और अगर खुद से नहीं हो रहा, डोंट अननेसेसरली वेस्ट योर टाइम एंड योर चांसेस ऑफ मेकिंग अ ग्लोरियस करियर फॉर योरसेल्फ. Please join my courses, use the code SEDLIVE and immediately get 10% discount. Get what is called as 24 karat rock solid preparation by me, Dr. Sidharth Arora. In the words of Unacademy, let's crack it. Until next time, God bless, thank you and Jai Hind.